Good morning, students. In last video we have completed electric field due to multiple charges. बहुत सारे बच्चे पूछोगे सर सीरियसली ऐसे क्लास ले रहे, बस खाली सीरियस में रहे तो कैसा था, कुछ बीच में थोड़ा इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, बना देंगे. So today we are entering the one of the important thing in the electrostatic, that is electric field, electric dipole. The name itself indicates that electric dipole. Electric dipole. Electric, that is nothing but charge, common term. So yeah. Dipole, di means two, pole. अक्सर ये टर्म हम लोग मैग्नेटिज्म में पढ़े रहते हैं. We have got the two poles, one is north pole, another one is south pole. वही कंसेप्ट यहाँ पे चार्ज पे लगा सकते हैं. So di means two, pole. Pole belongs to nature of the charges. We have got the two types of the charges in electrostatics. One is the positive charge, another one is negative charge. So di means two. Pole belongs to what here? The charges. So there are two kinds of the charges. One is positive charge, another one is negative charge. We take the two charges. I take two charges. That is nothing but two charges. So the electric dipole consists of the two charges which are equal in magnitude but opposite in nature. If I take positive and negative charge, both are having equal in magnitude. Already they are what? Opposite in nature. So the electric dipole is a system which consists of two equal and opposite charges separated by a small distance. What is that electric dipole? Electric dipole is a system which consists of two equal and opposite charges which are separated by a small distance. सर हम इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ के क्या करेंगे? So every charge gives what? Electric fields. The region around the charge is nothing but the electric field where the test charge experience the force. We want to be calculate the electric field due to dipole. उससे क्या होगा? When you come across the electrostat, that is nothing but in capacitor, we come across dielectric medium. In dielectric medium the dipole plays very important role. One more thing, in the dipole we are come across polar molecules and non-polar molecules. There is one more term we are introducing, electric polarization. At that time we need the concept of what? Electric dipole. हर एक चीज़ को जुड़े से रहते हैं. Now this plays very important role in what? Capacitor. तो उसके लिए हम लोग क्या करें, यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं. So I take the electric dipole, that is nothing but two equal and opposite charges separated by a small distance which are having equal in magnitude. I take negative charge. This is one charge and this is another charge, plus Q. Separated by a small distance, everything should be measured from the center. Now this is the center, I call O. Now this is the distance L from the center for this negative charge, and this is at a distance L from the center for the positive charge. The total separation distance is L plus L, 2L. आप 2L भी ले सकते हैं, 2D भी ले सकते हैं, 2R भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं. सर हम L ले सकते हैं क्या दोनों बीच में चार्ज? ले सकते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता. If I take the L, when I measure from the center, I get what? The each charge from the center distance is L by 2. To avoid that fraction, I go for what? The L, totality. So now this is nothing but your electric dipole. The electric dipole consists of two equal and opposite charges separated by a small distance. That separation distance is nothing but 2L. Now this is nothing but our electric dipole. So after having this electric dipole, I come across the important terms related to electric dipole. One is the line joining the negative charge and positive charge. Now this line is called axis of the dipole. Axis of the dipole. A line joining
negative and positive charge of the electric dipole is known as axis of the dipole. अगर यही लाइन को खींच दिया मैंने, now this is a line joining the negative and positive charge of the electric dipole passing through the, that is nothing but axis of the dipole. Now this line is called axial line. The line passing through the negative and positive charge of the electric dipole through the axis of the dipole. Now this line is called axial line. अगर मैं सेंटर को कंसिडर कर दिया, if I take the center, now this is the dipole axis. I take the center, a line perpendicular to the dipole axis and passing through the center of the electric dipole. Now this is a line perpendicular to the dipole axis and passing through the center of the dipole. Now this line is called equatorial line. Equatorial line. इसको क्या बोलते हैं हम लोग? Equatorial line. One is axis of the dipole. The line joining negative and positive charge of the electric dipole is called axis of the dipole. The line passing through the negative and positive charge of the electric dipole through the axis of the dipole. Now this line is called axial line. और इसके बाद में then one more thing. A line perpendicular to the dipole axis and passing through the center of the electric dipole, then it is called equatorial line. Now this line is called equatorial line. Now these are the basic things related to what? Electric dipole. Then after that I take the electric dipole concept. इस पूरे लाइन को निकाल देता हूँ मैं. एक्सिस ऑफ डाइपोल वहाँ पे रहता है, एक्सियल लाइन रहता है, equatorial line, everything will be there. I take the electric dipole. I take one more important concept belongs to the electric dipole. Now these are the two equal and opposite charges separated by a small distance 2L. Then one more thing, that is nothing but electric dipole तो हो गया. Then that is nothing but one more thing, that is called, we call P, that is dipole moment. P is nothing but here dipole moment, electric dipole moment. उसको क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? P बोल कर रिप्रेजेंट कर रहे हैं. So what is that electric dipole moment? Is it a scalar quantity or vector quantity? If it is vector quantity, what is its direction? If it has got the direction, then what is its SI unit? Basic concept को आ जाते हैं. The electric dipole moment P is defined as, रहने को दो चार्जेस हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव, दोनों को मैग्नीट्यूड सेम है एंड देयर इज अ सेपरेशन डिस्टेंस 2L, रहने का इतना ही है यहाँ पे. Then I can define the electric dipole moment. The electric dipole moment is defined as the product of magnitude of the either charge. What is that sentence? The product of magnitude of the either charge and separation distance between the two charges, that is 2L. Just देख लो, गौर करो definition. Don't by heart the definition. Just you have to be concentrate the figure. The electric dipole moment is defined as the product of magnitude of the either charge and separation distance between the two charges. Now this is called electric dipole moment. Then what is its SI unit? Its SI unit is, charge is measured in terms of coulomb, length is meter, coulomb meter, don't read centimeter, coulomb meter. Is it a vector quantity or scalar quantity? It is a vector quantity. So electric dipole moment is a vector quantity. Electric dipole moment is a vector quantity. Then what is its direction? The direction of the electric dipole moment is from negative to positive charge. This is nothing but P. Direction. Sir, positive to negative नहीं हो सकती क्या? नहीं. Why we take negative to positive only? Because the moment of the electrons is from
cathode to anode, from negative to positive, when you come across the what? Current electricity. We know that. What is the direction of the motion of the electron? From negative to positive. By keeping that concept, we give the direction of what? The dipole moment from negative charge to positive charge. Now this is nothing but a vector quantity. Its direction is from negative to positive. Now these are the things belongs to what? Electric dipole. What we have studied? What is electric dipole? The electric dipole is nothing but two equal and opposite charges separated by a small distance. That small distance is taken as 2L. And after that, when you join the two charges of the electric dipole, the line joining the two charges of the electric dipole is called axis of the dipole. Then after that, the line passing through the negative and positive charge of the electric dipole through the axis of the dipole, that is called axial line. Then after that हम लोग क्या पढ़े? The line perpendicular to the dipole axis and passing through the center of the dipole, then it is called equatorial line. Then after that, we come across the main thing, electric dipole moment. The electric dipole moment is represented by P. Then how it is defined? The electric dipole moment is defined as the product of magnitude of the either charge and separation distance between the two charges, that is 2L. So P equals to Q into 2L. It is a vector quantity. Its SI unit is Coulomb meter. Then what is the direction? The direction of the dipole moment is taken from negative to positive charge. Is it clear? एक बार figure देख लो, ये concept देख लो. Right? So I go for electric field due to dipole at a point. On the axial line एक derivation है और एक equatorial line another derivation. We have got the two derivations. One is on the axial line, another one is an equatorial line. Then the last thing of the electric dipole, that is nothing but torque due to, that is nothing but electric dipole in a uniform electric field. ये तीन derivation जो है, that is belongs to what? Electric dipole. तो जा सकता हूँ next इसको? Yes, very good. I come across the important derivation. Electric intensity due to electric dipole at a point on the axial line. At a point on the axial line. So, आप लोग needs figure understanding कर लो. If you know the figure properly, if you understand the figure properly, derivation ends. I don't tell how to do the derivation. Just I interpret the figure properly. If you understand the figure properly, then there will be no question of what. So after completion of electric dipole concept, we come across electric intensity due to electric dipole. We have got the three derivation belongs to what? Electric dipole. One is electric intensity due to dipole at a point on the axial line. Second derivation belongs to electric intensity due to electric dipole at a point on the equatorial line. Then third last one is electric dipole. When the dipole is placed in the region of uniform electric field, then what is the torque experienced by it? Torque on an electric dipole in a uniform electric field. Now these are the three basic derivation belongs to what? Electric dipole. So I come across the first derivation, electric intensity due to electric dipole at a point on the axial line. So I come across electric intensity due to dipole at a point on the axial line. At a point on the axial line. At a point on the axial line. Axial line. Now, these are the three important derivations, major derivation for electric dipole. उसमें से first derivation हम क्या कर रहे हैं? Electric intensity due to dipole at a point on the axial line. So यहाँ पे हम लोगों को derivation बैठ करने की ज़रूरत नहीं है, practice करने की ज़रूरत नहीं है. Just you have to understand the figures. Then how to draw the figure? Everything will be in the topic name only. Just to concentrate the heading. आप heading को analyze करो, figure अपने आप आ जाते हैं. So what is that? Dipole. I go for the dipole.
डाइपोल कंसिस्ट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, एक माइनस क्यू है और एक क्या है प्लस क्यू है, एंड सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस 2l. दिस इज आवर इलेक्ट्रिक डाइपोल. यस, आई नेम द पोजिशन ऑफ द चार्ज. वन इज ए पॉइंट और एक बी पॉइंट. नाउ दिस इज द सेंटर ऑफ द डाइपोल, द डिस्टेंस l. ईच चार्ज फ्रॉम द सेंटर इज हैविंग द डिस्टेंस l. Right? At a point on the axial line, now this is the axial line, the line passing through the charges of the electric dipole through the axis of the dipole is called axial line. Now this is axial line. जहाँ तक एक्सटेंशन करते करते वहाँ पे भी है, हम लोगों को उधर जगह छोड़ देते हैं, यहाँ पे जगह है, डायरेक्शन के लिए ए यूज कर लेते हैं. At a point on the axial line, now this is axial line. At a point, P is the point. At a point. Now this is the point where I want to be calculate the electric intensity due to dipole. According to what? The title. So when I take the point P, every point measures its distance. What is that distance to be measured for the electric dipole? The point P is at a distance measured from the center of the dipole. What is that distance? You can take D, R, anything. I take distance D. It is from the center of the dipole. P is the point at a distance D meter apart from the center of the dipole. Then we know that wherever you want to be calculated the electric field, to confirm the existence of the electric field or electric intensity, I need the test charge. So P is the point where I want to be calculated the electric intensity. So यहाँ पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैलकुलेट करना, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है कंफर्म करने के लिए मेरे को क्या चाहिए? टेस्ट चार्ज. आई प्लेस द टेस्ट चार्ज. व्हाट इज द टेस्ट चार्ज? Q naught. व्हाट इज दैट मैग्नीट्यूड? +1 कूलम. Then I take the concept of what? कूलम. दो चार्जेस ये सेपरेशन डिस्टेंस हो जाता है. Then from the positive charge, positive force of repulsion. Now this is the force, right? Force of repulsion. Then we know that E equals to F by Q naught. Q naught equals to what? 1. Then E equals to F. ये concept है. Then this force is nothing but electric intensity. Shall I write? E. Due to positive charge, I call this is E1. E1 is the electric intensity at a point P due to the charge plus Q. That force is nothing but what? E. A concept use कर लेता हूँ. Then what is the distance? Total distance कितना है आपको? यहाँ पे D है, यहाँ से यहाँ तक. आप लोगों को कितना चाहिए? 4 से प्लस Q से P पॉइंट तक. Now this measures what? D minus L. चेक करके देख लो. Shall I write? D minus L. टोटल डिस्टेंस D है, यहाँ पे L गया, बचा कितना? BP. D minus L. Is it clear? Yes. E1 is the electric intensity due to a charge plus Q at a point P which is at a distance D minus L. Then अब ये दोनों चार्ज कंसिडर कर लेता हूँ. नेगेटिव पॉजिटिव force of attraction. Now this is the force of attraction. Now this force is nothing but what? Intensity E. So this is due to what? Negative charge. Shall I call E2? Yes. E2 is the electric intensity at a point P due to the charge minus Q of the electric dipole. So E2 is the electric intensity due to negative charge. E1 is the electric intensity due to positive charge of the dipole. Yes. So sometimes we take the help of what? Electric lines of forces. Positive away, negative towards. ये best concept है, easy करने के लिए. Right? Then what is the distance of the point P from the charge minus Q? यहाँ तक तो distance D है. अब A भी measure कर ले यहाँ पे L. कितना हुआ? नेगेटिव चार्ज से D plus L. आप इतना फिगर अंडरस्टैंड कर ले. डेरिवेशन एंड्स. I don't teach derivation, just I make to understand the figure. अगर फिगर समझ में आ गया, डेरिवेशन हो गया. I can say that derivation ends. बाकी के खाली इक्वेशन रखना है, कुछ भी नहीं. Is it clear? So D minus L is the distance of the point P from the positive charge. D plus L is the distance of the point P from the negative charge minus Q. E1 is the electric intensity due to plus Q. E2 is the electric intensity due to what? Minus Q.
Is it clear? Yes. Then shall I go for the derivation step? Yes. सर हम फिगर तो डाल दिए, सेंटेंस लिखना जरूरी है. डोंट बाय द सेंटेंस, जस्ट टू ग्लांस द फिगर. सेंटेंस बनाओ खुद का. कंसिडर इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P. यहाँ पे नहीं लिखा मैंने, पूरा गड़बड़ हो जाता. डाइपोल मोमेंट P एंड P is the point on the axial line at a distance d from the center of the dipole. Then after that, E1 is the electric intensity at a point P due to the charge plus Q, which is at a distance d minus L. And E2 is the electric intensity at a point P due to the charge minus Q of the dipole, which is at a distance d plus L, as shown in the figure. Is it clear? Now these are the sentences to be made by you. बहुत सारे बच्चे सर हम डेरिवेशन लिख करते हैं लेकिन उसके लिए एक्सप्लेनेशन कैसा लिखना है, एक्सप्लेनेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है. फिगर को अच्छी तरह से ग्लांस करो, अच्छी तरह से समझ लो, then you can make the sentence of your own. Then will no question of biting the things. Then you feel that we are not studying the physics, we are studying just like the language. जब लैंग्वेज के एग्जाम्स रहते हैं आप लोग टेंशन लेते क्या नहीं लेते? क्यों बोले तो यू कैन राइट इट इन योर ओन वर्डिंग्स. इसके वास्ते आप लोगों को टेंशन रहता. वही मेथड यहाँ पे अप्लाई करो. यू अंडरस्टैंड द थिंग्स क्लियरली, देन यू मेक द थिंग्स टू बी, यू कैन राइट द थिंग्स by understanding the subject matter clearly in your own wordings. There will be no tension for writing the equation, that is explanation for the respective derivations. Shall I go for the next step? Then थोड़ा मैं फर्स्ट ईयर का कंसेप्ट यूज कर लेते हैं. E1 and E2 are the electric fields. They are the electric intensity at a point P due to the negative charge and positive charge. So both are vector quantities. When the two vectors are acting at a point in opposite direction, what is the resultant? The resultant is difference between their magnitudes and it takes the direction of what? Bigger vectors. यहाँ पे कौन सा बड़ा है? E1 बड़ा है, E2 बड़ा है. सर हमको कैसा मालूम हो जाता? Already we have derived the derivation. The electric intensity at a point E equals to 1 divided by 4 pi epsilon naught charge by distance square. Then E is inversely proportional to d square because charge constant है, magnitude 1 divided by 4 pi epsilon naught constant है. यहाँ पे यूज करें तो intensity is inversely proportional to square of the distance. As the distance increases, intensity decreases. As the distance decreases, intensity increases. यहाँ पे कौन सा चार्ज नजदीक है पॉइंट P को? प्लस Q. So this is d minus L. This is closer to what? Point P. Hence, as the distance decreases, intensity increases. E1 is greater than E2. Hence, I can write from vector concept, the resultant electric intensity E equals to E1 minus E2. Difference means bigger minus smaller, and it takes the direction of bigger vector. Its direction is along E1. Now this is my basic concept, right? Then the resultant electric intensity at a point P equals to, these two are the vectors acting at a point P in opposite direction. The resultant E equals to difference between their magnitudes. So E1 is greater, hence E1 minus E2. Then what is our basic equation? The resultant electric intensity, I call this is resultant electric intensity. E equals to, formula क्या है? 1 divided by 4 pi epsilon naught charge by distance square. Shall I write here? Charge by distance square. Right? Then, therefore, the resultant electric intensity ER equals to E. Shall I write? Then, यहाँ पे निकाल देंगे, confuse मत कर लो. E1 is the result of what? Positive charge. 1 divided by 4 pi epsilon naught Q divided by distance. What is that distance? BP square. एक सेंटेंस, एक स्टेप ज़्यादा रहने दो अंडरस्टैंडिंग होने तक. अंडरस्टैंडिंग होने के बाद स्टेप निकाल सकते हैं. E2 is the electric intensity due to what? Negative charge. Shall I write? 1 divided by 4 pi epsilon naught. ये वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड ऑलवेज पॉजिटिव Q. सो नेगेटिव रहे तो इसका मैग्नीट्यूड क्या रहता है? पॉजिटिव Q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट AP स्क्वायर. लिख सकते हैं. देन द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी 1 divided by 4 pi epsilon naught Q. What is BP? D minus L whole square. So 1 divided by 4 pi epsilon naught Q. What is AP?
डी प्लस एल होल स्क्वायर। एक बार इक्वेशन ग्लांस कर लो। अगर इक्वेशन अच्छी तरह से समझ में आ गया देन देयर विल बी नो प्रॉब्लम। जस्ट आई टेक द कॉमन टर्म्स। राइट, कॉमन ले सकता हूँ मैं यहाँ पे। सो आई राइट हियर द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, एक लाइन खींच लेता हूँ मैं। द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिसिटी आर इक्वल्स टू व्हाट इज द कॉमन टर्म, Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बचा क्या अब 1 डिवाइडेड बाय डी माइनस एल होल स्क्वायर, यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय डी प्लस एल होल स्क्वायर। राइट, आप इसको छुड़ा दिए व्हेन यू आर गोइंग टू बी सॉल्व दिस इक्वेशन। शैल आई राइट Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं। अब एलसीएम ले सकता हूँ मैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डी प्लस एल होल स्क्वायर ए डी माइनस एल होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं, डी माइनस एल होल स्क्वायर ए डी प्लस एल होल स्क्वायर। सही है। राइट, अगर आपको 1 डिवाइडेड बाय 1 बाई बी बोले तो क्या लिख सकते हैं आप, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बी माइनस ए डिवाइडेड बाय ए बी। यही कंसेप्ट यूज करा मैंने, वही कंसेप्ट है। सही है, इज इट क्लियर? कौन सा कंसेप्ट मालूम हो गया? देन आई सॉल्व दिस ब्रैकेट, डी प्लस एल होल स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर और ए माइनस बी होल स्क्वायर। अब इसको छुड़ा दिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब दोनों ब्रैकेट छुड़ाने के बाद सो देयर इज अ नेसेसरी कैंसलेशन टर्म हो जाते हैं। देन आई राइट डायरेक्टली Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसको छुड़ा दिए, डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2LD ए डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2LD। आफ्टर डूइंग द नेसेसरी कैंसलेशन दिस इज 4LD लिख सकता हूँ मैं। देन इसको मैं कॉमन ब्रैकेट डाल सकता हूँ मैं। सो डी माइनस एल होल स्क्वायर डी प्लस एल होल स्क्वायर। राइट, कॉमन ब्रैकेट डाल सकता हूँ मैं, डी माइनस एल डी प्लस एल, इसको कॉमन ब्रैकेट का स्क्वायर। सही है। अगर ए स्क्वायर बी स्क्वायर है आप लिख सकते हैं ए बी होल स्क्वायर, वही कंसेप्ट में यहाँ पे यूज करें। सो डी माइनस एल होल स्क्वायर डी प्लस एल स्क्वायर, कॉमन स्क्वायर डाल दिया मैंने। इज इट क्लियर? यस। देन ए प्लस बी ए माइनस बी, व्हाट इज दैट कंसेप्ट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो रिजल्टेंट इंटेंसिटी Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ए 4LD यहाँ पे रख दूँ मैं, इसको छुड़ा दे डी माइनस एल डी प्लस एल, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ले सकते हैं ना यहाँ पे, डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ए स्क्वायर जो है एज इट इज। एक बार इक्वेशन देख लो, कुछ भी नहीं है इक्वेशन में, आप लोग अच्छी तरह से समझ ले बेसिक कंसेप्ट को, कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। राइट, अब इसको मैं नीट लिख दूँ, 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, शैल राइट Q इंटू 4LD इज नथिंग बट 2L इंटू 2D लिख सकता हूँ मैं। यस, यहाँ पे एज इट इज रखता हूँ मैं इसको, डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। सही है। देन मैं थोड़ा फिगर को एनालाइज करता हूँ। पॉइंट P विच इज एट ए डिस्टेंस D and L is the position of the charge plus Q from the center and position of the minus Q, charge minus Q from the center. आप पॉइंट P को कितना भी दूर ले जा सकते हैं, but L should be remain same. So it means that ऑलरेडी ये स्मॉल डिस्टेंस सेपरेशन है, उसमें आधा करें सो L को, फिर छोटा हो गया। इफ आई कंपेयर D and L, D is far greater than L. If D is far greater than L, then L square is neglected. Square of the smaller is again too small, और रहने का कोई फायदा ही नहीं है। So D is far greater than L, then L square क्या करते हैं, स्मॉलर का वैल्यू उसको स्क्वायर करें फिर स्मॉलर आ जाता, कोई मतलब ही नहीं रखने का। I neglect this L square. So what is your equation? Then I come across here. The resultant intensity is equals to 1 divided by 4 pi epsilon naught. इसको अच्छी तरह से Q इंटू 2L इंटू 2D लिख सकता हूँ मैं। यहाँ पे L स्क्वायर नेगलेक्ट कर दिया, बचा क्या, D स्क्वायर।
to the power 2. So Q into 2L, क्या बोल सकते हैं हम इसको? Q into 2L is nothing but dipole moment P, the resultant electric intensity 1 divided by 4 pi epsilon naught P into 2D divided by D fourth. एक D कैंसिल हो गया, then I can write the resultant electric intensity 1 divided by 4 pi epsilon naught 2P by D cube. This is nothing but your electric intensity at a point on the axial line 1 divided by 4 pi epsilon naught 2P by D cube, where P is the electric dipole moment and D is the distance of the point P from the center of the dipole. सिंपल डेरिवेशन है, एक बार देख लो, नीट फिगर अंडरस्टैंडिंग कर लो. Now this is the first part, and after that we come across the second part of the derivation, and last conclusion we have done here, 2P by D cube. Is it clear? Yes. अब इसको इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, कंफ्यूज नहीं होना. सो आई कैन राइट द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन. इसको ऐसा भी कर सकते हैं, एक्सियल लाइन, द रिजल्टेंट इंटेंसिटी दैट इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑन द एक्सियल लाइन, ये इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई 4 pi epsilon naught 2P by D cube. आपको पहचानने के लिए ईजी हो जाता है. ए मेंट फॉर व्हाट? एक्सियल लाइन. इज इट क्लियर? एक बार पूरे फिगर को ग्लांस करो, राइट? एक बार फिगर ग्लांस कर ले, फिगर अंडरस्टैंड कर ले, देयर विल बी नो प्रॉब्लम फॉर डूइंग द डेरिवेशन. वी कैन इजीली डू द डेरिवेशन. इज इट क्लियर? यस. सो ए डेरिवेशन होने के बाद वी कम अक्रॉस इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल ऑन द इक्वेटोरियल लाइन एंड द टॉर्क ऑन ए इलेक्ट्रिक डाइपोल. ये दोनों क्या करेंगे? वी कम अक्रॉस इन द नेक्स्ट क्लास. आपको अब समझ में नहीं आएगा, कुछ भी प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. लास्ट को आप लोगों को नोट्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं पीडीएफ फॉर्म पे. सो वी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द होल टॉपिक वी गो फॉर द नोट्स इन द पीडीएफ फॉर्म. यस, एक बार इक्वेशन को ग्लांस कर लो. कुछ तो प्रॉब्लम रहे बोले तो वी कैन रेक्टिफाई इट. जस्ट यू हैव टू बी राइट इन द कमेंट बॉक्स. सर हमको ये समझ में आएगा और एक बार बता दो, देन आई गो फॉर वंस अगेन. Don't be take the tension regarding the physics. Almost all the topics are going to be completed, full syllabus on your YouTube for the beneficial of students. समझ में क्या? Yes. Shall I continue in the next class? Okay. Thank you.